Good morning, students. So today we will discuss about regulation of gene expression. Now gene, all of you know that gene is the smallest unit on DNA, and gene is responsible to express particular character. Either one gene is able to express one particular character, or many genes they are able to express one particular character. So both the concept, both the theories, they are applicable in genetics. Okay. Now what is the meaning? How gene is expressed. Okay. Unless until the gene is expressing itself, the character cannot be expressed. And how the gene is expressing? The gene, which is a part of the DNA is making RNA, so that is called transcription. Then in the RNA which is produced, so that is called hnRNA. Okay. So DNA, which can be called as gene, so that is making RNA. Then RNA by the process of translation is making protein. So this we have studied in central dogma. Okay, and for expression of any character the protein is required. So that is the explanation of the gene expression. How gene is expressing itself. Expression of the gene in the eukaryotes and the prokaryotes are different. In eukaryote, the gene expression, it can be regulated at different steps. Gene regulation can be controlled at the transcription level also, when there is a formation of the RNA on the DNA, or the processing, when there is the splicing, the introns are separated and the exons they are connected together, so that is called processing. So that level also you can control the expression of the gene. Transport of messenger RNA from nucleus to the cytoplasm, because the messenger RNA, so that is produced inside the nucleus. Then through the nuclear pore it comes to the cytoplasm, and in the cytoplasm there is the translation. During the translation process the protein is produced. So in case of the eukaryotes, if you want to control the expression of the gene, then it can be controlled at different steps. Okay, but in case of the prokaryotes, what is the difference? So that only can be controlled in prokaryotes. Gene expression can be controlled only at transcription level. So that is the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. Now with the help of an example, I will explain you how the gene is expressed. Because every time the gene is not expressed, unless until there is requirement, the gene will not express itself. तो डीएनए जो है, डीएनए में आपको बहुत सारे जीन्स मिलेंगे, बट हर एक जीन जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ई कोलाई दैट इज अ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है उसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलाक्टोसिडेज। ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन प्रोड्यूस एनर्जी। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, ई कोलाई बैक्टीरिया सेल कैन यूज लैक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में लैक्टोज है, तो ई कोलाई जो है लैक्टोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकता है, और लैक्टोज जो है ये बाहर से अंदर उसके सेल में आ सकता है। ठीक है। Now, if there is requirement of lactose in E. coli cell, then only the gene which can produce the enzyme, which is called beta galactosidase, will express itself. अगर उसको requirement है तभी ये अपने आप को express करेगा, और जब express करेगा तो ये enzyme produce करेगा beta galactosidase। आपको मालूम है हर एक enzyme जो है ये protein molecules है। ठीक है। तो ये enzyme जब produce होगा तो lactose जो बाहर का एनवायरनमेंट में है वो ई कोलाई सेल के अंदर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज व्हिच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जीन अपने आप को अलग-अलग मेटाबॉलिक स्टेट में एक्सप्रेस कर रहा है, अलग-अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एक्सप्रेस। सो द जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन डिफरेंट मेटाबॉलिक स्टेट, or in a different physiological state, or in
डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये सारा अलग अलग कंडीशंस में अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। नाउ हाउ जीन दैट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन प्रोकैरियोट्स। As I told you, in prokaryote gene expression can be regulated only at transcription level. ठीक है? Now this is an operand. This is a gene in prokaryotes, and the operand is having one promoter gene, one regulator gene, and the operator gene and structural genes. So these are all the different parts of operand. इसको हम लोग operand बोलते हैं. जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको यूनिट को हम क्या बोलते हैं? operand. तो ऑपरेंड में क्या है? ऑपरेंड में आपका प्रोमोटर भी है और एक रेगुलेटर जीन भी है और एक ऑपरेटर जीन है, देन स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये सब उसका पार्ट्स है, ठीक है? तो आप कोई भी लेवल में उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे प्रोमोटर उस एरिया है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर के जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो। तो अगर आप यहीं पर इसको रोक दोगे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से, तो आपका ये प्रोसेस जो है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है, ये बंद हो जाएगा। या फिर now this regulator, so that is also producing a protein which can bind to the operator. अगर ऑपरेटर भी ब्लॉक हो जाएगा, उसको भी ए लेवल में अगर आप उसका काम को बंद कर दोगे, तो फिर बाकी फंक्शन जो है ट्रांसक्रिप्शन का ये बंद हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में इस लेवल पे ही आप जीन एक्सप्रेशन जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? आप कोई भी स्टेज में कोई भी जीन एक्सप्रेशन अगर आप उसको काम फंक्शन को बंद कर रहे हो, तो ऑपरेंड का फंक्शन जो है ये बंद हो जाएगा। और ऑपरेंड जो है दो तरह का है, वन इज द इंड्यूसिबल, अनदर इज द रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल ऑपरेंड जो है, फॉर एग्जांपल द लैक ऑपरेंड, लैक मींस लैक्टोज, सो लैक ऑपरेंड। नाउ हियर द लैक ऑपरेंड विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। If there is requirement of lactose by the cell, then only the lac operand will be activated and it will start working to produce the enzyme. और repressible operand वो operand है जो हर समय on mode में रहता है, but अगर उसका requirement fulfill हो गया है तो फिर ये switch off हो जाता है। तो यहाँ operand को हम switch on भी कर सकते हैं या switch off भी कर सकते हैं, और जिसको आप switch on कर रहे हो उसको आप बोलते हैं inducible operand, और जिसको आप स्विच ऑफ कर दे रहे हो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको बोल रहे हो रिप्रेसिबल ऑपरेंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैक ऑपरेंड। लैक मींस लैक्टोज ऑपरेंड, ओके? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स यू गेट दिस क्वेश्चन, ओके? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैक ऑपरेंड एंड हाउ इट इज फंक्शनिंग। सो दिस इज अ लैक ऑपरेंड, and the lac operand is having the gene and the promoter, then the regulator gene and the operator gene and the structural gene. Here there are three different types of the structural gene: Z, Y and A. Promoter, so that is the area to which RNA polymerase will bind. Now the lac operand, so it can be either in switch on mode or switch off mode. When switch on mode, if there is requirement of lactose and the lactose is present in outside environment, then the lac operand will be on switch on mode, and this is also called the positive regulation, okay? And if there is no lactose, no requirement of the lactose, cell does not want to take lactose, then that is called switch off conditions or negative regulation. So we will discuss both the positive as well as the negative. Now this one is the negative. There is no requirement of the lactose by the cell. So here I have written inducer. So what do you understand by inducer? Lactose itself is called inducer. For any operand to work, that chemical compound or the biomolecule should be there inside the cell in very small quantity, and that is acting as inducer, okay? Now when there is negative regulation, then the regulator gene that is producing a messenger RNA, and the messenger RNA, so that is called repressor messenger RNA. Now repressor messenger RNA is making the protein which is called the repressor protein. So this protein will bind to operator and block operator. So when the operator is blocked, then the structural gene will not be able to express itself. So this is called negative regulation, okay? But suppose there is requirement of lactose by the cell,
So here what will happen? Now here similarly the regulator gene will produce the repressor protein, but the inducer lactose will bind to the repressor protein and inactivate. This repressor protein is now inactivated. So when it is inactivated, now it will not be able to bind to the operator and the operator is free. Then the operator will give instruction to structural gene so that the structural gene can produce messenger RNA, and that messenger RNA is called lag messenger RNA. So as there are three genes are there, Z gene can produce beta galactosidase enzyme, Y gene can produce permease enzyme, A gene can produce trans-acetylase enzymes. So what is the function of beta galactosidase? Beta galactosidase can break lactose into glucose and galactose. Permease can increase the permeability of the cell to lactose, so that the lactose which is there in the outside environment that can easily enter to inside the cell. And trans-acetylase, so that is making the molecular arrangement so that the lactose which is broken down into glucose and the galactose, they can be broken down into two different compounds, because as you have read in chemistry that the molecules, they can be neither created nor destroyed. The same number of the molecules, only there is different arrangement is there to make the different biomolecules. So these are the function of these three enzymes, and this is the way how the lag operation will be in positive mode or positive regulation.